जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल हैं? कौन कौन लोग हैं? हेलो। वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम। लेट्स डू अनदर लाइव सेशन। जल्दी जल्दी से ऑडियंस आ जाए एंड देन विल गिव इट अ स्टार्ट। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से ऑडियंस आ जाए यार, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाओ ताकि हम जो है वो इसको स्टार्ट कर सके। जी बिल्कुल, आप अपने क्वेश्चन जो है वो रेडी रखिए जी। इंशाल्लाह विल वी गोना आंसर। Guys, let's just wait a little bit. आप अपने जो है वो नाम बता दीजिए जी, कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से यूनियन कर रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से, ताकि तब तक हम
Karachi, Pakistan. Here it was. Spain. Nice. UK. कनाडा. जी जी बता दीजिए जी. ओके अपनी अपनी सिटीज के नाम लिख दीजिए. आई बिलोंग टू मर्दान KPK. वेलकम जी. दुबई. थोड़ा सा. I'll be in few minutes. Come sir. वेलकम. आ जाइए ऑफिस. ओके. यहाँ पे ओके. वर्जीनिया. वर्जीनिया नॉर्फोक्स. वेरी गुड फारूकी साहब. आप तो हमारे नेबर हैं जी. वर्जीनिया फेयरफैक्स में. नाइस 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 नाइस. Few more minutes guys. We'll wait before we officially start and I start taking your questions. तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. जी जी गाइस अपने क्वेश्चंस जो है वो रेडी रखिए ताकि जो है वो I'll answer and address all of those. ओके. अपने अपनी सिटीज के नाम लिखते जाइए गाइस प्लीज. किस किस सिटी से किस कंट्री से कहां से ट्यून इन कर रहे हैं. प्लीज राइट योर नेम्स. ओके. चलिए जी. पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं. You can let them know how they can. Okay, any idea about how long it takes to get an E2 permit from Dubai? जी बिल्कुल. दुबई में तकरीबन 3 से 4 महीने, कभी कभी 5 महीने जो है वो भी लग जाते हैं for E2 visas. Okay. How much minimum amount needed for E2 for USA? तकरीबन $1 लाख से ऊपर जी. मिनिमम 100,000 अबव होनी चाहिए जी. E2 मिनिमम बजट 100,000 से ऊपर डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस. की हाल चाल जी. वधिया जी. तला साहब ऑल गुड. हाउ अबाउट यू? डिट्रॉइट से हैं जी. पलक हैं डिट्रॉइट से. पलक वेलकम. आई वांट टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग वीजा जी. इन्वेस्टिंग वीजा दैट्स व्हाट वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट. इट्स एन E2 वीजा पलक which which gives you the right to run and operate the business in America. Okay. अच्छा जी. यहाँ पे कौन कौन है? मियाँ उमैर साहब हैं. If the E2 change of status denied, our visitor visa
our visit visa was safe after denied if we leave USA. As long as if your visa is not cancelled categorically, then you are safe. I mean, you can definitely fly on the B1, B2. Be careful, guys. ICE department is very active. Thank you so much, Akif. Thank you for the advice. ICE is very active, and we have nothing to do with the those things. Okay, वर्जीनिया से हैं जी, लंदन से हैं जी, प्रवीण बहल लंदन से. I am in a janitorial business in Canada, Ontario. Can you guide me on how to get a janitorial franchise in USA? You are already in janitorial business. You can get a same business established here. You can choose any kind of a franchise, or you can have your own existing business set up from the scratch. तो दोनों तरीके से जो है वो हो सकता है. आप अपना क्लीनिंग बिजनेस, जैनिटोरियल बिजनेस जो है वो बना सकते हैं. What about appointment in Karachi and in terms success, which is better, कराची और दुबई? कराची और दुबई आजकल दोनों सेम ही चल रहे हैं जी. कराची में भी अराउंड 4 से 5 महीने इतना ही टाइम चल रहा है. इतना गुस्सा क्यों मियां साहब? ना सर, अल्लाह ना करे. गुस्सा क्यों करना है? साला गुस्सा नहीं करते यार. Okay. Vancouver, Canada. Can I change business after getting E2? Yes, you can, but you just need to update to the USCIS. But you can change. Okay जी. Forex trader जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वकार साहब हैं जी. रहील भाई, how much investment required for E2? जी $1,00,000 से ऊपर, minimum 100,000, ideally is 150 to 200,000. Can you assist and provide consultation regarding L1A? जी बिल्कुल, of course we can assist L1A. Any investment or business visa categories which comes for L1A, E1, E2, and EB5. So we can assist you in all those visa programs. Okay, ji. Nade Nasim, hello sir, hi. I tried for visit visa but refused unfortunately. No problem, ji. Try again. Try again. Nida Lahore से हैं जी. Welcome Nida. I belong to Mardan KPK. Okay, very good. Interested to go to USA with family? Sure, sir. No problem. You just need to set up a business, and then we can help you. Doing the visa process. How long do you have to stay in your previous status to get your E2 visa back? What do you mean, Farooqi sab? Previous status and get E2 visa back? What does that mean? I didn't get your point. Haris, hello sir. पाकिस्तान से पैसे एक्सचेंज के जरिए भेजे जा सकते हैं E2 स्टेटस के लिए? जी भेजे जा सकते हैं. शहबाज साहब हैं जी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. नूर साहब, hello, how are you? Hashim Kiani साहब, do you provide consultation L1A for from Rawalpindi? जी हाशिम, of course we provide consultation for L1A. अगर आप रावलपिंडी से हैं तो DHA 2 में गीगा मॉल में जो है वो मेरा ऑफिस भी है. You can probably set up a meeting there, and we can definitely assist you. Okay. Nida हैं जी. Sir, I wanted to ask, if a person got banned for 5 years, will they be able to process their E2 after getting unbanned? Yeah, as long as आपका जो ban है remove हो गया, then of course you can go for this one, for E2. How much enough for E2 status from B1? Can you make our setup on B1? Can we make our setup? जी B1 पे अगर आप होते हैं तो of course there are certain things which you can do and certain things which you cannot. तो जिसका मतलब ये है कि आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हो, ब्रोकर से मिल सकते हो, लीज एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, लेकिन आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते. तो दोज आर द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट आप कर सकते हो. जो B1 से E2 का चेंज ऑफ स्टेटस है वो बिल्कुल पॉसिबल है, और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली लो है. 60, 70, 80 हज़ार $, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. इतने में भी आपका चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो हो सकता है. Palak ji, my situation, I came to US on a visitor visa a month ago. I would like to apply for an investor visa. Can you share information regarding the process and the investment? The process is basically simple. You are here on a legal status which is like a B1 and a B2. You need to make an investment. You need to set up a company. You need to buy a business or start a new business. उसमें आप $1 से $1.5 लाख की investment करेंगी, and based on those investment we prepare your documentations, and
then you apply for a change of status. राहिल भाई 3 करोड़ जमा कर जोड़ के आपके पास आता हूँ फिर जी। जल्दी जल्दी से फटाफट से दौड़ के जाइए जी तला साहब, और पैसे इकट्ठे करना शुरू करें, और करके तो जूं ही इकट्ठे हो जाए इंशाल्लाह तो फिर बताइएगा। राइट I work for a multinational company. We are a US-based company and a parent branch in the USA. And back office for project execution in Pakistan. Both companies have the same names in, and I am the CEO of Pakistan company. जी हाशिम, आप बिल्कुल सीईओ होंगे. We need to probably evaluate way deeper than that if you're talking about the L1 visa. But naturally अगर आपका पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी या सिस्टर कंपनी का जो या ब्रांच कंपनी का जो कनेक्टिविटीज है, if that relation is properly established, then yes, you can probably consider and evaluate yourself for L1 visa. Am I eligible for L1A? Both companies have a bank wire records and the documentation we are running operation. जी जैसे मैंने अभी आपको बताया हाशिम, मोस्ट लाइकली अगर आपका एक ऑफिशियल आपका जो कनेक्शंस है एज अ पेरेंट एंड अ सिस्टर कंपनी और अ ब्रांच कंपनी, वी नीड टू प्रूव दैट, बट वंस इट इज प्रूव्ड देन यस यू कैन अप्लाई। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ गुड और बैड इज दैट, तो इस वजह से वो सारी चीजों को इवैल्यूएट करना होगा। Okay. ओके जी, मेरा भी F1 स्टेटस है, तो मुझे E2 पे जाने के लिए क्या F1 स्टेटस बहाल रखना होगा और कितने? सर एक तो माशाल्लाह आप अमेरिका में F1 स्टेटस पे हैं, तो आप थोड़ा-सा अगर इसको इजी लिखते तो मुझे मेरे लिए ज़रा ज़्यादा आसान होता। एनी हाउ F1 स्टेटस पे हैं, तो F1 स्टेटस एज़ लॉन्ग एज़ आपका स्टेटस वैलिड है, आप E2 पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपका स्टेटस ओवर हो गया, एक्सपायर हो गया, आपका ओपीटी वगैरह खत्म हो गया, तो देन यू कैन नॉट। उस्मान आदिल साहब हमारे रेगुलर व्यूवर जो हमेशा में हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं और सवाल करते हैं, आज देखते हैं जी आपके क्या सवाल है जी। कैन आई गेट अ यूएस B1 वीजा इफ माय इन्वेस्टमेंट फंड्स आर रेडी बट आई हैव नॉट बॉट अ बिजनेस येट फॉर एन E2? आई मीन B1 वीजा तो आप कभी भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं ना, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। If I visit your office in Rawalpindi, can I get a meeting with you or should I have to see someone else? Plus, what was the address for Rawalpindi office? Please let me know. नहीं जी, मैं तो अमेरिका में हूँ जी। रावलपिंडी ऑफिस में आप जाएंगे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे मेरी टीम होगी। आप ऑफ कोर्स उनसे जो है वो आपको, यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। वी डू नॉट मीट विदाउट अपॉइंटमेंट्स एंड वी डू नॉट वेलकम वॉक इन्स। आप जब वो अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफिस में जाके, वहाँ पे मेरी टीम होगी, वहाँ पे ऑफिस मैनेजर होगा, आप वहाँ पे उनसे मिलके अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं। मुझसे मिलना होगा तो मैं वर्जीनिया में बेस होता हूँ, तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, या वेट करना होगा जब मैं नेक्स्ट पाकिस्तान का मेरा ट्रिप लगेगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम इश्तियाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन आई साइन अ बिजनेस एग्रीमेंट और मीट सेलर्स ऑन B1 बिफोर अप्लाइंग फॉर E2? यस, ऑफ कोर्स यू कैन साइन द बिजनेस एग्रीमेंट्स and you can meet sellers, you can meet the realtors, you can meet consultants, lawyers, attorneys, CPAs, accountants, everybody, but you cannot do anything in the business. Sir, can we get a private consultation with you? Yes, of course. You can just go to the link in the bio. जो जिस भी social profile पे हो, आप bio पे जाइए, वहाँ पे आप जो है वो there will be a link to book a consultation. You can book a consultation with my team or you can book a consultation with me directly. Also, both things are available. Okay. Satbir Singh ji, I tried contacting you for so many times, but the WhatsApp number keep on asking money to talk. Satbir Paji, that's a half true information. The WhatsApp number would be for my team, my support team, or my the marketing team.
they would not ask you the money if you just ask some basic questions. ठीक है? Basic questions are always free. ਤੁਸੀਂ general information चाहिए ने, you can ask 10, 100, 200 and 1000 questions. I have people ਜਿਹੜੇ we who are getting consultations and question answers with me from last 2, 3, 4 years. ठीक है? बहुत सारे साला तू लगे देने नाल, they are trying to get the information and we are always assisting and helping. If they are asking you the money, that means you are talking about some particular your own case scenarios. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, that of course goes for money. So it's not they are asking you the money to talk, it's a money to pay money for a consultation to discuss the project in detail. And of course this is a free conversation, this is a free session. Come on the live, join the live session, come and ask me whatever the question you want to ask, as long as they are generic, right? But agar tanu personal one-to-one consultation chahiye na, of course we have to charge you the money. We are not here for free, right? I hope you understand it. Okay जी, क्या E2 status green card की तरफ ले जाता है? नहीं जी, E2 is a non-immigrant visa. E2 status does not lead to the green card. All right, thanks for the help. I appreciate it. You're welcome. सईदी बार आपका इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस जी गीगा मॉल में है जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, DHA2 गीगा मॉल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 3rd floor पे. That's where you can visit my office. But of course, I'm again reminding it, do not go walk-ins. We do not welcome walk-ins. You can come to the office, but nobody will be there to nobody will welcome you to do the consultations. आपको consultations चाहिए होंगी तो you need to book an appointment before you go to the office. So keep that in mind. So, okay. If I buy a business before getting the E2 visa, how do I keep running legally until I arrive? You cannot, Usman. I think आपको बहुत सही टाइम से जब यही सारी चीजें explain कर रहे हैं. You cannot. You can buy the business. और उस बिजनेस में अगर if it is running operating business, उस बिजनेस में employees होंगे, managers होंगे, you need they need to run the business. You cannot stand even for 1 day or 1 hour into the business on the register, on the counter. You cannot do any transactions, you cannot take any orders, you cannot serve the client. You are not allowed to do that even if you own the business. सर कनाडा से होम रेनोवेशन फॉर E2 के लिए कितने फंड चाहिए? $1 लाख जी, तकरीबन 80,000 1 लाख के करीब के अमाउंट में आपका जो है वो होम रेनोवेशन हो जाएगा. ऑफिस नंबर्स जो है वो सही साहब, देयर इज अ द यूएस टीम नंबर्स व्हिच आर ऑलरेडी रनिंग ऑन द स्क्रीन. आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और पाकिस्तान का नंबर भी. नाउ लेट मी सी. ओके, हियर इज योर the details about the Pakistan number. So you will get the Pakistan details from here. That is 0332000766 ठीक है जी. Okay. All right. You can tell him about the daily mission. Okay. All right, guys, and
I want to meet you. I want to do the change of status from B1 B2 to E2. जी sure, no problem. Where are you based in? क्या नाम है आपका जी? Abdullah Faisal. You can definitely. I'm based in Virginia. If you want to come here, you can book a consultation and book an appointment. Come to my office, inshallah. No problem. We'll be able to help you out in your changing of your status by investing in a total wireless store. Sure, no problem. We have total wireless stores ready, and we can help you in building up also. Okay, home renovation services के लिए. Okay, न्यूयॉर्क. ओके, सो न्यूयॉर्क से तो आप हमारे से 3 4 4 साढ़े 4 घंटे दूर हैं जी. आप जो है वो यू कैन ऑफ कोर्स बुक एन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन कम. सलाम वालेकुम अस्सलाम. मदर सर जोड़ा जॉइन आई एम हियर सर. वेयर आर यू जोड़ा साहब? आ जाइए आप इफ यू आर हियर. ओके, I have heard some agents saying we can do $25,000 for investment. Is that true? I don't know, Ji, who is the agents and who is saying $25,000 and in what business will you get in $25,000? That's more important. So if you have some business जो कि आप $25,000 में बना के उसको justify कर सकते हैं, again, I mean, it's a chance, it's a gamble which you want to take. You can take, up to you. I cannot comment on somebody else, right? So. Okay, जी pro gamer हैं जी. Can I get US E2 visa if I sell on Amazon under my LLC and I am from Pakistan? Yes, you see selling on Amazon that itself is not. I mean that's just depending कि आपका selling का volume कितना है. There are people who are selling $2,000 products in a month, right? So that business is too small to qualify for an E2. But there are people, there are businesses who are selling like $300,000 a month. So yes, they are qualified. So depending, that's just a generic question. Yes, e-commerce model, Amazon business model are qualified models. In order to get change of status, what are the other options than E2? E2 and F1, जो भी हम, I mean, which I can probably think on the top of my mind. F1 कर लें अगर आप स्टूडेंट में हैं, एजुकेशन करनी है. If you are into the universities, then F1. Otherwise E2. That's the only fastest and suitable option. शकील साहब, आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है ये भी बता दें जी. मैं सर मुलाकात आप मेरा ऑफिस वर्जीनिया में है. मैं फिजिकली वर्जीनिया अमेरिका में होता हूँ. यू कैन बुक अपॉइंटमेंट, यू कैन कम हियर. और इफ यू आर, आई डोंट नो व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन, अगर आप किसी और जगह पे हैं तो डिपेंडिंग इफ आई एम ट्रैवलिंग देयर और इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अमेरिका, so we always keep postings about our the meetup sessions and seminars. तो उसमें आप जो वो ज्वाइन कर सकते हैं. In order to change from B1 to B2. जी B1 B2 से जी पलक, जैसे मैंने बताया कि जो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन है वो F1 और E2, यही दो है. F1 is only for the students if you want to go for the student, and E2 is for investors. Do I need to hire US employees before my E2 visa is approved? अगर आपका रनिंग बिजनेस है उस्मान, तो yes, of course there will be people who are running and managing the business. But अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो it's not mandatory, though it is recommended to have at least 1 or 2 employees, but it's not mandatory. Can we get E2 from buying Metro by T-Mobile sub dealership? Yes, of course you can. Okay. I am planning a trip to USA next month and would love to discuss E2 visa details with you. Sure, no problem, sir. You can always come, book an appointment well in advance so that we just make sure that we are on a good availability. I am based in London, no problem. When we apply from Canada for E2, can we still enter during the processing period? Yes, of course. As long as अगर आपकी change of status की petition है तो फिर नहीं हो सकता. But अगर you are from Canada and you have applied, submitted your E2 petition, you can come and enter USA. What about valet parking business? Sir, any business, any legal business, as long as it is legal and it is active, it is qualified. I am planning a trip. Yes, sure, no problem. I'm based in UK. How, sir, how is F1 visa ratio? I do not deal with F1G, so I do not know, what is the ratio.
When we apply from Canada for E2, can we still yes? Sir, student Canada से USA कैसे आए? स्टूडेंट कैसे आए? बाय रोड आए जी, प्लेन पे आए, बाय रोड आए, बाय कार आए, बाय सी आए, बाय शिप आए, कैसे भी आए, यू नो. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वीजा स्टेटसेस, तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो F1 F2 वीजा लेना पड़ेगा ना. I am Toronto, Canada. I am Toronto, Canada, or I am in Toronto, Canada. Okay, need information for a trucking company. जी sure, trucking company बताइए जी क्या information चाहिए जी आपको. से देखिए ये जो सवाल होता है ना, guys, I mean understand this this concept. It's a question answer sessions, live session. जितना short और relevant question होगा, उतना ज्यादा अच्छे से और फास्टली मैं आंसर कर पाऊंगा. यू नीड एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ ट्रकिंग बिजनेस. तो ट्रकिंग के बारे में आप क्या मेरा नॉलेज टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि मुझे ट्रकिंग के बारे में कितना पता है? ट्रकिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना सर. उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली आपको डिस्पैचिंग करनी है, ब्रोकरेज करनी है, आपने कैरियर बनना है, आपने यू नो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने ट्रक अकाउंटेंट बनना है या ट्रक यू नो ड्राइवर बनना है. तो और ट्रक ड्राइवर करना है तो आपने इंट्रा स्टेट करनी है, इंटर स्टेट करनी है, लॉन्ग हॉल करना है, आपने क्या करना है, सीडीएल में जाना है, बहुत सारी चीजें हैं. So ask me the relevant questions so that I can answer you the relevant thing. Asking for a trucking company business, so trucking company, yes, it is qualified. That's a short answer. होम रेनोवेशन सर्विसेज के लिए पैसे अकाउंट में रखने हैं या कहीं इन्वेस्ट भी करने होते हैं? जी, पैसे अकाउंट में नहीं होते. किसी भी बिजनेस में आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं. यानी अगर आप होम सर्विसेज फॉर एग्जांपल बना रहे हो, तो होम सर्विसेज में आप जो है वो ऑफिस लोगे, इक्विपमेंट लोगे, टूल लोगे, गाड़ी लोगे, वैन लोगे, आप अपनी हायरिंग करोगे, वेबसाइट्स बनाओगे, मार्केटिंग करोगे, ब्रोशर्स बनाओगे, डोर टू डोर ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, यूनिफॉर्म रखोगे, एम्प्लॉयज हायर करोगे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काम करोगे. इन सारी चीजों में आपके पैसे लगेंगे. ये सारे जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके बाद आप E2 अप्लाई कर सकते हो. I want to start truck dispatching work in USA from Pakistan. तो then you can just simply start. आपको एक कंपनी चाहिए, वो आप कंपनी रजिस्टर कर लीजिए LLC, और आप जो है वो पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर स्टार्ट कर ले बिजनेस. और इनफैक्ट बल्कि अगर आप पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान में आप अपनी कॉल सेंटर रजिस्टर करें और उससे यूएसए की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें. नो प्रॉब्लम. सलाम ब्रो, मेरे पास इटालियन नेशनैलिटी है, मुझे E2 वीजा के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? मिनिमम $1 लाख सर. इटालियन है, इटालियन, कैनेडियन, यू नो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, कोई भी पासपोर्ट है. तो बिजनेस के हिसाब से वेरी करता है, बट स्टैंडर्ड जो है वो $1 लाख हम लोग रिकमेंड करते हैं. सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम इंटरेस्टेड in dehydrated fruit exports to Gulf. Can you share me how to get buyers? कमाल हो गया शुएब साहब, माँ सदके जाए जे, खुदा दा नाजे, बंदा को टॉपिक चीजें डिस्कस कर लेता है, देख लेता है. आपने पाकिस्तान से भेजना बहुत अच्छी बात है. गल्फ में एक्सपोर्ट करना है तो वंडरफुल. तो गल्फ के किसी प्लेटफॉर्म, किसी पोर्टल पे जाओ ना मेरी जान. हम तो अमेरिका की बात कर रहे हैं. अब ये ना पूछना कि अमेरिका से बाहर कैसे मिलेंगे. ओके सर, सब डीलरशिप पे मेट्रो की ओनरशिप हमारे पास ही होगी. मोर ओवर, डज मेन डीलर सेल देयर सब डीलरशिप टू द पीपल विदाउट टेलीकॉम बैकग्राउंड? सर कुमेल नकवी साहब, दैट्स गोज इन अ वेरी पर्टिकुलर वन. आई वुड से यू प्रोबेबली नीड टू कनेक्ट विद द मेट्रो, और उनसे आप उनकी पॉलिसी चेक कीजिए कि क्या वो आपको अलाउ करते हैं, या मेट्रो मास्टर एजेंट से चेक कीजिए. देन दे कैन गाइड यू प्रॉपरली. शकील साहब है जी, 100 से 150,000 आई हैव फॉर इन्वेस्टमेंट एंड आई एम इन ओमान, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस? जी, आप अपना जो है वो मेरी टीम से, नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है. कनेक्ट कीजिए अपना. इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन, यू कैन हैव अ डिस्कशन. इफ यू वांट टू गिव इट अ स्टार्ट, शेयर योर पासपोर्ट, वी साइन अप द एग्रीमेंट्स एंड वी ऑफिशियली गिव इट अ स्टार्ट. Sir, which state is better for truck dispatch and how low LLC fees like taxes? सर, ट्रक डिस्पैचिंग आपने किसी एक स्टेट में करनी है या आपने नेशनल करनी है? अगर आपने नेशनल करनी है तो देन यू कैन गो इन एनी स्टेट. ठीक है. लो टैक्सेस में भी जाना है तो आप ऑफ कोर्स नेवादा चले जाएं, वायोमिंग चले जाएं, आप यू नो टेक्सास चले जाएं, फ्लोरिडा चले जाएं. दो हैव लो स्टेट इनकम टैक्स. फेडरल टैक्स जो है वो तो सेम है, स्टेट इनकम टैक्स उनका कम है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं.
Okay, ji. Sir, what says, sir, share your team WhatsApp number to book a one-on-one session and the WhatsApp. Okay. I think आप TikTok पे हैं तो आपके TikTok के बायो में मेरा प्रोफाइल होगा जी. उसमें लिंक होगा, आप वहां से ले सकते हैं. आप अदरवाइज जो है वो 571 776 7862 571 776 7862 पे जा सकते हैं. आप मेरे टोल फ्री नंबर 8889911786 उस पे जा सकते हैं. या इसके अलावा जो बाकी नंबर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स सारे प्रोफाइल में बायोस में अवेलेबल हैं. Sir, is accounting, bookkeeping, and an HR firm qualifies for any two? This business doesn't need any assets other than the rented office and hiring contractors on a project basis. Yes, it qualifies, but you still need to find ways to spend money. Understand कीजिए guys. आप अगर ऐसा बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हो, ठीक है, आईटी का काम कर रहे हो, तो आपको ऑल व्हाट यू नीड इज अ लैपटॉप, राइट? आप अपना लैपटॉप लेके कहीं पे भी बैठ के आईटी की कंपनी चला सकते हो. अकाउंटेंट कहीं पे भी बैठ के लैपटॉप से काम कर सकता है. बट अगर आप इतना यानी इस प्रोफाइल का बिजनेस बनाओगे जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो इट विल नॉट जस्टिफाई फॉर ई टू, और आपकी ई टू की एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होगी, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. थैंक यू. वेलकम जी. ओके. All right. So, okay, would you mind sharing more details about the vending machine business and what's the minimum requirement? जी, वेंडिंग मशीन बिजनेस में जो है वो ऑफ कोर्स देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की टोटल रिक्वायरमेंट अगेन इट गोज फॉर 100,000 अबव. नाउ देयर आर वेंडिंग मशीन्स जो आपको मार्केट में $1,500 पे भी मिलेगी. देयर आर मशीन्स जो आपको $15,000 में भी मिलेगी. तो आप अगर 1500 वाली मशीन ले रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 40 से 50 मशीनें होंगी, उनकी लोकेशंस होंगी, उनकी इन्वेंटरी होगी, आप उन सबको सेटअप करें, तो आप ई2 को क्वालिफाई कर पाएँगे क्योंकि आप इतने पैसे उस पे लगाएँगे, ठीक है? अगर आप 15,000 वाली होंगी, तो तब भी आपके पास कम से कम 5 से 7 या 8 मशीनें ऐसी होनी चाहिए, जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस हों, और उस लोकेशन के ऊपर जो है वो आप अपना ई2 को जो है वो ई2 की इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और उसकी बेस के ऊपर ई2 बना भी सकें. सो टेक्निकली स्पीकिंग 100,000 आपको फिर भी स्पेंड करना है. वेंडिंग इज अ ग्रेट बिजनेस. हम लोग इनफैक्ट बल्कि अपना अब खुद का भी जो है वो वेंडिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं वेरी सून, जस्ट इन फ्यू कमिंग डेज. जो है वो हम वेंडिंग मशीन्स का जो पूरा एक एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे फॉर ई टू क्वालिफिकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल्स एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंडिंग मशीन्स. ई टू की इतनी नॉलेज आ गई है कि सोच रहा हूँ एजेंसी शुरू कर लूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल सर. अगर आपको लगता है कि खाला जी का वाड़ा है तो तुम बिल्कुल करो सर, कोई मसला नहीं है. एजेंसी बनाए, हम बंद कर देते हैं दुकान, आप खोल लें. ओके. I am currently on B1 B2 visa, changing status to E2. So can I still bring my wife and the kids to USA in E2? My investment is $110,000 and a business is a restaurant in Philadelphia.
ओके अहमद, अगर आप यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द चेंज ऑफ स्टेटस, तो आई एम श्योर जो आप जिस भी अटॉर्नी के साथ काम कर रहे होंगे, ही वुड हैव रिव्यूड योर डॉक्यूमेंट्स एंड ही वुड हैव गाइडेड यू। अगर नहीं किया तो आप उनसे जो है वो कनेक्ट करें, बिकॉज ही हु अंडरस्टैंड्स योर सिचुएशन, योर केस, योर प्रोफाइल, वो आपको ज्यादा बेटर पोजीशन में होगा ये इसका आंसर करने में कि वेदर यू शुड अप्लाई फॉर योर फैमिली एंड व्हेन यू शुड अप्लाई फॉर योर फैमिली। Would you mind sharing more details about the funding? Okay, हो गया जी, great. And for Canadian citizen, do you recommend change of status or consular processing? There is no change of status for Canadians because I mean until and unless you get a B1 B2 visa, आप एस्टा पे आके या वीजा वेवर प्रोग्राम पे आके चेंज ऑफ स्टेटस नहीं कर सकते, तो इसलिए वे बेटर है ऑफ कोर्स टू गो विद द काउंसलर प्रोसेसिंग। आप काउंसलर प्रोसेसिंग ही कीजिए। सर व्हाट अबाउट सैलून बिजनेस? जी बताइए जी, क्या करना है सैलून बिजनेस को? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट सैलून बिजनेस? Okay, guys, I think that's I'll just take one or two, just few more questions, and then we should be good to go. जल्दी जल्दी से जिसके जो जो सवाल है जल्दी जल्दी से क्विकली राइट डाउन कर लीजिए, because then I'll be able to wind up. I have experience in a dental supply business in Pakistan, and if we open a branch of our dental supplier and also want to get an E2, is it possible? What is the business ratio of dental stores in USA? अजी बिजनेस रेशो के लिए तो आपको जब वो वी नीड टू प्रोबेबली कंडक्ट अ होल रिसर्च कि क्या बिजनेस उसका आपके कॉम्पिटिटर्स में क्या है, मार्केट डायनामिक्स कितने हैं, मार्केट कैप क्या है, so that we need to do, but technically you can do that business also. How much investment required for please okay for salon business? Again sir, investment किसी भी business में 100 से start हो रही है, ऊपर आप 2 लाख में बना लें सैलून, 5 लाख में बना लें, एनी टाइम, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। ओके, पावर वॉश बिजनेस कॉस्ट प्लीज। पावर वॉश में सर अगर आप फिजिकल की बात कर रहे हो, कार वॉश की, इट्स एक्सपेंसिव, 3 4 5 लाख डॉलर। अगर आप विंडो पावर वॉशर या हाउस पावर वॉशर सर्विसेज कंपनी की बात कर रहे हो, तो देन दैट कैन बी 100 150। Any idea on the Toronto consulate processing timeline these days? Thanks for answering all my questions. जी टोरंटो एम्बेसी तकरीबन 2.5 month जो है वो ले रही है। Can you make a video on a dental supply business? It's very specific niche down business, ji. I mean, we probably, I mean, because again, what you want to know on the dental supply, that's what the matter is. सही है। मेरी जनरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें पर्टिकुलर डेंटल सप्लाई नहीं, उसमें डेंटल सप्लाई भी हो सकता है, उसमें आपके स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी मेरी जो है वो एक्सपोर्ट्स की और E1 की, E2 की वीडियोस मौजूद हैं। Particular to the dental supply, I don't know what exactly do you want to ask to understand, but of course I'll keep that into the consideration. Thanks for your advice. For no experience, which business would you suggest for E2 visa purchase? No, first I'll say go and learn the business. अगर experience नहीं भी है तो passion होना चाहिए, जिसका passion हो वही business आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं करो। China, I'm a Canadian. How can I apply for How can I apply for E2? First visit visa and directly E2 because Canadian. थैंक्स, अप्रिशिएट। नहीं जी, E2 पे या तो आपको अगर आपने चेंज ऑफ स्टेटस करना है तो आपको विजिट वीजा अप्लाई करना है, तो आगे आप यहाँ पे आए और चेंज ऑफ स्टेटस करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली E2 अप्लाई कर सकते हैं। Can I get an E2 visa for opening a small trucking company? I am Canadian. Yes, of course. You can get E2 visa on Canadian on trucking companies, but small companies से मुराद है कि मिनिमम भी आपके पास या दो से ज्यादा ट्रक एंड ट्रेलर जो है वो होने चाहिए। ओके जी, ये होपफुली लास्ट होगा जी। I'll just sum it up.
Can I do change of status E2 and wait until my appointment interview and go to Toronto consulate and get sticker? Is it possible? Oh, why would you go with that much confusion? So either you go for a change of status and stay, or if you go for just appointment and do the visa processing there. Why would you overlap the both processes? Any website for checking available businesses online? G flipannybusiness.com. FLIP flipannybusiness.com. I am paying 5 grand to the first 5 people to. Oh, you, uh, go, Baba, go. Okay, thank you. All right, guys. So I think that's good for now, and thank you so much for tuning in and being here. Very I hope that I answer all of the questions. अगर कुछ रह गया होगा, so you can still connect with my team, connect with me. Numbers are already there on the video, in the bios, whichever the platform you are in. You will find the numbers to book a consultation, to have more information. Visit our website, go to the channel. आपको सारी question answer वहां से भी मिल जाएंगे. And thank you so much for being here. Thank you. Assalamu alaikum, sir.